Following gurus without discrimination, without viveka, without this heart, discriminating the entire thing, you become just a pashu tied up to the post of a guru or tied up to a shastra. Namaste ji. What is this clay and the fertile soil which is compared in relationship with God and Satan, the role of the mind in the whole process. Mind can become a precious thing, a fickle mind, disturbed mind, restless mind. It can become the precious thing, meaning a very fertile soil for a Satan. While the same mind, when it is regulated, it becomes a fertile soil for God. But when it is not regulated, it is useless for God. Then how we become Pashus, bound by rope to a post. जैसे कहते हैं ना, पशु को बांध देते हैं खीते पे, उसको पशु कहते हैं. तो हम लोग भी बंधे हुए होते हैं, लेकिन जिसमें तुरिया की कंडीशन आ गई, दोज हु रिमेन एब्जॉर्ब्ड एंड रिमेन अवेयर, तो जागृत रहते हैं. डीप स्लीप में भी उनकी हालत ऐसा नहीं है कि वो सोते नहीं है, सोते हैं, लेकिन दे आर फुल ऑफ अवेयरनेस ऑफ their inner state. Even when you tap them and you wake them up, they are not groggy. Their consciousness returns with a smile, with a good response. They don't get upset. Oh, why did you tap me and woke me up? ऐसा नहीं कहते हैं. वो बंधे हुए नहीं है, उनको पूरा फ्रीडम है, इसलिए उनको पशु नहीं कह सकते. पशु उनको कहते हैं जो बंधे हुए हैं अपनी आदतों से, अपने विचारों से. ब्लाइंड फेथ रख के कई लोग सुनते रहते हैं, गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने कहा है, लेकिन कुछ अंदर से सोचते नहीं है कि सही में मेरे लिए है कि नहीं. बाबूजी महाराज ने भी कहा, हम भी जब एडवाइस देते हैं, whenever I give any advice, please make sure you refer it to your heart, and only when your heart okays it, obey. If your heart says no, don't obey. So this is how we can get out of this status of becoming a Pashus. Just by becoming aware of what I should be doing and what I should not be doing. In the chapter called Karma, Lalaji has described 4 or 5 categories of Pashus. Nara Pashu, Striya Pashu, Guru Pashu, Veda Pashu. One wonders why he is calling Guru Pashus and Veda Pashus especially. I can understand Nara Pashu and Striya Pashu, but why Shastras and why Gurus? Because following Shastras and following Gurus without discrimination, without viveka, without this heart, discriminating the entire thing, you become just a Pashu tied up to the post of a Guru or tied up to a Shastra. Again, somewhat controversial subject Lalaji touches, and he says there are 3 causes of bondage. Remembrance, which is so highly praised in Sahaj Marg, he says that it's a bondage. Second bondage is meditation, that we do all the time. Third, bhajan or devotion or bhakti towards God. All 3 things are so highly praised in Sahaj Marg, has been criticized by Lalaji Maharaj, that they can become the bondage. But when can they become bondage? He explains it.
When the practice of these three is associated with external things, the result would be birth and bondage. And when they are practiced at heart, internally keeping the goal constantly in view, it will result in freedom from external and surface bondage. तो गुरु का स्मरण, गुरु पे ध्यान, गुरु की भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। वो सही में अंदर से, दिल से होना चाहिए। जब याद करते हैं सुपरफिशियली, मेंटली, जैसे कोई समस्या के बारे में सोचते हैं, इसी तरह गुरु को भी सोच लेते हैं, चलो यार टाइम है अभी सोच लेते हैं, उनका ख्याल कर लेते हैं। वो इधर उधर घूमते होंगे, सोते होंगे, सत्संग करते होंगे, पढ़ते होंगे, ये ख्यालों में, ये इमेजिनेशंस है। Connecting with the Master heartfully is a different matter altogether. Meditation, again as they say, for temptations of reaching higher regions, आगे पहुंचना इसलिए ध्यान करते हैं, तकलीफों से बचना इसलिए ध्यान करते हैं, वो ध्यान नहीं है। Then it becomes a treatment by any physician. So you go into a treatment for your emotional well-being to a guru. अपने को अंदर अच्छा लगे इसलिए करते हैं, तो वो ध्यान भी बेकार का हो जाता है। और भक्ति एक्सटर्नली डन, थोड़ा रो लिए, थोड़ा गाना गा लिया, अरे गुरु बहुत अच्छे हैं, वो है, ये सब दिखावा हो जाता है, तो ये भजन कीर्तन डिवोशन भक्ति का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए सहज मार्ग में बाबूजी बार बार और खास करके जब ब्राइटर वर्ल्ड से मैसेजेस देते हैं, वेरी पावरफुल मैसेज, इंटीरियराइज योर मास्टर, इंटीरियराइज हिज प्रेजेंस इन योर हार्ट, make his presence a livelier through your lifestyle, then Sahajmal will work. Otherwise, it will only create bondage and slavery.